Hi friends, good afternoon. Today I am going to discuss on basics of accounts. What is accounting? Because it will be helpful to the students of 11, 12 or graduation level also to make a clarity on accounting. Also, businessmen should get the some idea. What is accounting? तो अकाउंटिंग मतलब क्या रहता है? इसमें क्या प्रोसेस रहता है, उसका बुकिंग कैसे होता है, अकाउंटिंग क्यों रखते हैं। तो आज मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ। उसमें कोई बुकिश डेफिनेशन या वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बस समझने के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप घर में देखते हो या आप अपना भी हिसाब जब रखते हो तो आप दो चीज़ लिखते हैं कि आपके पास इनकम क्या आया और उस इनकम से आपने खर्चा क्या किया, इन्वेस्टमेंट क्या किया, एसेट क्या परचेस किया, ये सब हिसाब रखते हैं। तो आपको तो मालूम है पेमेंट हम कैश या बैंक से करते हैं। अगर कैश से पेमेंट लिखें उधर हम कॉलम बनाएंगे, कैश का एक बनाएंगे, बैंक का एक कॉलम बनाएंगे और एक्सपेंस का एक कॉलम बनाएंगे। अगर पेमेंट दिया तो कैश में से कम करेंगे और दूसरा हम उससे क्या लिया उसका एक्सपेंस में डाल देंगे। बैंक से हुआ तो बैंक में डाल देंगे। सेम अगर आपको सैलरी आता है या बिजनेस इनकम आता है, अदर सोर्सेज लाइक बैंक इंटरेस्ट आता है, तो वो आपके बैंक में जमा होगा या कैश में ऐड होगा और इनकम कॉलम में आप बुक करेंगे कि ये पैसा मुझे किसका आया। एकदम सिंपल। और डे एंड पे या वीकेंड पे, मंथली एंड पे आप देखेंगे टोटल मेरे पास कैश कितना आया, मैंने एक्सपेंस आउट किया कितना डेली एक्सपेंस के लिए, कुछ मैंने कुछ परचेस किया है कैसे, जैसे लैपटॉप या अदर चीज़, मोबाइल और एनी बिग एसेट लाइक हाउस, वो एक्सपेंस साइड में आ गया। सपोज कभी कभी हम क्रेडिट पे भी कुछ परचेस करते हैं जैसे, तो तब हम क्या बुक करेंगे? अगर हमने खर्चा तो किया उस मंथ में बट हमने कैश भी नहीं किया पेमेंट और बैंक पेमेंट भी नहीं किया, तो हाउ यू टू शो यू? तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि इस पर्सन को मेरे को इतना पैसा देने का है, उसका नाम लिखेंगे। तो उसी पर्सन के नाम को अकाउंटिंग में पार्टी नेम बोलते हैं। सेम इन इनकम साइड, अगर आपका इनकम कैश में या बैंक में नहीं आता है और किसी को आप क्रेडिट पे सेल करते हो या उधारी पे पैसा देते हो कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, तो वो अमाउंट आप खर्चे में दिया बोल के दिखाएंगे और वो पार्टी का नाम लिखेंगे किसको दिया। तो ये जो सिंपल फंडे हम यूज करते हैं डेली मेंटेनिंग द आवर एक्सपेंस शीट और इनकम शीट, सेम इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वी आर मेंटेनिंग फॉर द बिजनेस, और बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती है। ट्रांजेक्शन क्या होती है? रिसीट, पेमेंट, सेल, परचेस, एक्सपेंस, इनकम, सेम। बस हर एक बिजनेस का इनकम अलग होता है, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग होते हैं। ऐसे तो कॉमनली कुछ आपके जैसे कि फर्नीचर पिक्चर, मशीनरी, आपका ऑफिस, टेबल चेयर, ये कॉमन रहते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस के लिए स्पेशल आप मशीनरीज लगती है, उनके कुछ फिक्स एसेट अलग से रहेंगे। कैपिटल, हर बिजनेस चालू करने के लिए जो जो पैसा लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल आप खुद से भी डालते हैं, कुछ आप बैंक से लोन लेके भी डालते हैं, तो उसका इफेक्ट एक लोन को जाएगा, एक कैपिटल को जाएगा। तो बिजनेस की ये जो ट्रांजेक्शन है उसको हमें अकाउंटिंग करना है। अभी बिजनेस की ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होती है। डेली सेल होता है, डेली परचेस होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, कैश इनपुट आता है, कैश आउटपुट होता है, बैंक से पेमेंट जाता है, बैंक पे पेमेंट आता है। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो हम
बुकिंग करते हैं उसको अकाउंटिंग एंट्री बोलते हैं। डेट वाइज एंट्री वाइज वी हैव टू बुक द एंट्री, उसी को हम अकाउंट एंट्रीज बोलते हैं। और डेली बेसिस पे हम ये अकाउंटिंग करते हैं। कुछ अकाउंटिंग हमारे कैश में, कुछ बैंक में होती है और कुछ क्रेडिट बेसिस पे होती है। जब क्रेडिट बेसिस पे होती है, जैसे मैंने बताया, वो कैश या बैंक के अलावा उस पार्टी का नाम लिखते हैं। तो ये डेली हम ट्रांजेक्शन बुक करने के बाद मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, हाफ ईयरली वाइज उसका, और आखिर में ईयरली वाइज उसका समरी बनाते हैं। अभी समरी क्या बताते हैं? समरी जब हम बनाएंगे तब हम एंट्री लेवल नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हर एक एक्सपेंस को एक अकाउंट हेड देते हैं, इनकम को अकाउंट हेड देते हैं। जैसे कि एक्सपेंस में टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रॉ मटेरियल परचेज, करेक्ट। इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम, सेल्स इनकम, डिविडेंड इनकम। तो ये अकाउंट वाइज जो हम समरी बनाते हैं पूरे साल की, उसकी टोटल बनाते हैं और उस समरी को हम एक ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। उसमें जो भी आउटफ्लो है, आउटफ्लो को आउटफ्लो साइड में लिखते हैं, इनफ्लो को इनफ्लो साइड में लिखते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में इनफ्लो को क्रेडिट बोलते हैं, आउटफ्लो को डेबिट बोलते हैं। तो हमारे आउटफ्लो दो दो किस्म के होंगे, वन एक्सपेंस, अदर इज एसेट। इन बोथ केसेस आवर कैश फ्लो और बैंक फ्लो, फंड फ्लो इज आउटफ्लो, यानी कि वो बाहर जाएगा पैसा। हम कुछ एक्सपेंस करते हैं तो पैसा पे करेंगे या पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर क्रेडिट पे है तो। सेम अगर हम एसेट परचेस करते हैं तो उस एसेट का भी हमें पेमेंट करना है, मे बी क्रेडिट बेसिस और ऑन द स्पॉट। So these both transactions are outflows, and in accounting, these are called as debit transaction. So these both transactions come in one side in the trial balance. That side is called as debit. Another side is inflow, which is credit in accounting language. Like income, जब हम सेल करते हैं उससे हमें कैश आता है। इंटरेस्ट बैंक में मिलता है, उससे हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। बाकी अदर अदर इनकम अगर कुछ है, हमारा कुछ स्क्रैप सेल करते हैं तो उससे जो भी सेल होगा या कुछ सर्विस देते हैं, उस सर्विस की फीस आती है, ये भी हमारा इनकम, उससे भी पैसा इनफ्लो होता है। दिस इज वन फ्लो, इनफ्लो, विच इज कॉल्ड एज इनकम। अनदर इनफ्लो इज टेम्पररी। First, I want to clear that income is your own. You cannot repay back. This is your ownership. Other inflow is which is temporary you got, like a loan from bank. इससे भी हमारे पास पैसा आता है, but this is not your income. This is temporary fund you take as a loan from bank. You have to repay it in future after some period with interest. So this is also inflow credit side, but it is liability. So two inflows are in accounting language. One is called as income, and other is called as liability. Now your whole yearly data comes this two column. One is debit, one is credit. Correct? Now you have to make a financial statement. In financial statement, two main statements are, one is profit and loss account and other statement is balance sheet. In profit and loss statement, we report or write the income and expense and their difference shown as profit or loss. If income side is more, then you got a profit. If expense is more than income, then you got a loss. Other statement is balance sheet.
In this side, what's your position? What is your financial position of the company? Means what are assets with you and what are liabilities with you. So debit side is asset, credit side is liabilities. So from the trial balance, from the debit side, first you have to post the all transaction in these two accounts. So from trial balance, from the column of debit, transaction goes to expense or asset. In profit and loss account, expense debit side, in balance sheet debit side asset. In the trial balance, credit column contains two credits. One goes to profit and loss account credit as a income, and another goes to credit of balance sheet as a liability and capital. Then you deduct the expenses from income, you get a profit. That profit goes to your balance sheet side credit because this is credit balance. So goes to balance sheet credit side in liability. Now your balance sheet credit side liability and asset side should be totally matched. Then only your accounts are going to be correctly reported. This is whole process is called accounting. In this one point I have to mention, if there is cash or bank transaction, not worry. We can book the entry as per expense and as per income. But in accounting, there are two systems. One is system is cash basis system and other is mercantile system. In cash basis, as per receipt and payments, accounting entries are made. In mercantile system, accounting is done on accrual basis. As and when accrued, the expense or income, we are booked. Cash or bank may be received or paid after some time. Suppose you have expense for the month of April, like a rent, but you are going to pay it in May, up to the 5 May. So your accounting entry is not made on 5 May. You have to book rent expense on the month end of 30th April as a rent expense to, अभी हमने पेमेंट तो किया नहीं तो हम पार्टी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, जो भी हमारा लैंडलॉर्ड रहेगा वी पुट हर नेम एज अ क्रेडिटर पेएबल, इसको हमें पैसा देना है. एंड व्हेन वी पे इन 5th May, then we make an entry payment made to that party, not expense. Expense we have already booked. Now we make a payment to that party, party name, landlord. So party name debit to bank. Likewise, same, if you paid expense in advance, is called as prepaid expenses. Like you have paid for 3 months rent in advance. In this example, if in April you paid rent for April, May, June. Now 2 months rent for May and June is not your expense for April. You are not going to book the 3 month rent in April. In April only book for the April month, and for the May and June rent you are going to show as a prepaid rent paid account और दैट पार्टी नेम अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू, हमने इनको पैसा दे दिया, अभी इनके पास हमारा पैसा एडवांस में पड़ा है. दिस इज योर एसेट. व्हेन मे मंथ कम यू रिवर्स द एंट्री लाइक रेंट एक्सपेंस टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. आपकी एसेट कम होगी, उनका एडवांस कम होगा और एक्सपेंस बुक होगा मे में. जून में जाएंगे, जून का रेंट बुक करेंगे एज एक्सपेंस एंड लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे और लैंडलॉर्ड का अकाउंट नील हो जाएगा.
अभी उसको हमारा कुछ एडवांस नहीं दिखेगा. Same for the income. If you have sale on credit basis and you have received the money next month, then you have to book the income and show that party as a receivable. I want to mention here what names are called in the accounting. For the receivable person, we are known as sundry debtors, and for the payable party, we call sundry creditors. Same as expense, we can get a income in advance also. When we get a income advance, we are not booking as a income, we are taking it as a advance. We debit the bank account, credit the party account, और जब तक वो हमारा उस पीरियड नहीं आता तब तक हमारा इनकम नहीं, तब तक हम उसको लायबिलिटी दिखाएंगे. सपोज अगर मुझे अगले 4 महीने का रेंट आ गया, वाई वी आर बुकिंग, आई विल टेल यू. अगर हमें अगले 4 महीने का रेंट एडवांस में आ गया और आपने बुक कर दिया इनकम, बट आफ्टर द 1 मंथ ही लेफ्ट द our premises, then we have to repay back for that remaining month. That's why that money is not your income. As and when he demand, you have to repay to him. This is accrual accounting system. And one another most important point I have to mention here, for each transaction, for there are two effects. One is debit and one is credit. Always there is a one account here for debit and one account here for credit. Then only accounting is matching. That's it. Very simple and in very layman language I have explained. If any doubts or query, you can comment in this video. We will happy to reply and help out. Thank you.